Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is fourth episode of Weekly Mastermind for this November month so that we can understand that what all happened in last 1 week and what all we can expect in the next coming weeks and so on. और निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई जोन बनेगा या नहीं, और साथ ही साथ जो फ्राइडे को बेरिश कैंडल्स फॉर्म हुए हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स, क्या उनको यहाँ से और कंटिन्यूएशन मिलेगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक आएगा? That's what we'll analyze in depth using top-down approach. That is, we'll analyze 3 time frames. That is monthly, weekly, and daily, where monthly depicts long-term trend, weekly depicts medium-term trend, and daily depicts short-term trend from swing trading perspective. और हम लोग 7 step analysis का यूज करते हैं. That is price, pattern, volume, momentum, volatility, time, and sentiment. जिसमें से हम लोग time and sentiment का फिलहाल यूज नहीं करेंगे. Plus we are going to analyze indices. तो उसमें volume का भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज वॉल्यूम वहां पे दिखती नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी आर ओनली गोइंग टू यूज 4 थिंग्स, दैट इज प्राइस, पैटर्न, मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी. एंड मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी के लिए हम लोग आरएसआई और बॉलिंजर बैंड्स का यूज करेंगे. एंड इफ यू आर समवन हु इज एब्सोल्युटली न्यू टू टेक्निकल्स, please do make sure that you check out our complete 17 part video series called as Basics of Technical Analysis, जहां पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टेक्निकल टॉपिक्स को अच्छे से समझ में आएगा. एंड वी हैव आल्सो एनालाइज्ड अ लॉट ऑफ चार्ट्स in every single concept ताकि आपको strong grip आए of all of those topics. So without further ado, let's quickly have a look at Weekly Mastermind for this week, right? So once again, welcome to Weekly Mastermind for 23rd of November 2025, जहां पे हमारा एजेंडा रहेगा. सबसे पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वील हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. तो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी अप बाय 0.61, सेंसेक्स अप बाय 0.79, बैंक निफ्टी अप बाय 0.59, मिड कैप डाउन बाय 0.55, इंडिया वेक्स अप बाय 14.15 एंड यूएसडी आईएनआर अप बाय 1.03. तो दिस इज अ बिग साइन ऑफ कंसर्न बिकॉज इंडिया वेक्स एंड यूएसडी आईएनआर काफी ज्यादा पॉजिटिव में है, विच इज नॉट गुड फॉर अस एंड फॉर द ओवरऑल इंडियन मार्केट्स एज वेल. तो निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो मंथली इज स्टिल बुलिश, वीकली भी बुलिश है एंड डेली इज आल्सो सस्टेनिंग अबव 60. सो ओवरऑल 3 time frames are sustaining above 60, which means जो मेन इंडेक्स है दैट इज बुलिश. यहाँ पे कोई भी साइन ऑफ कंसर्न नहीं है. बट द ओनली पॉइंट हियर इज दैट जो फ्राइडे को बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है उसने लाइक जो क्लोजिंग दी है वो थर्सडे के नीचे दी है, विच मीन्स दैट्स व्हाई द बेरिश कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड. तो अगर यहाँ से इसको और कंफर्मेशन मिलते हैं सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हायर बॉटम भी बन सकता है, और एल्स देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट जो पिछला वाला बॉटम था, अगर उस बॉटम को सपोर्ट बना के अगेन इट कुड गो इनटू अ कंसोलिडेशन ट्रेंड एज वेल, बिकॉज दिस इज लाइक दिस इज द रीजन ऑफ ऑल टाइम हाई जोन ऑन निफ्टी 50. तो रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट्स ब्रेकन आउट, और ऑल टाइम हाई जोन का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जहां पे बुल्स को बहुत ज्यादा टेक चार्ज करना होगा. सो प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट 1 or 2 weeks इट कुड टेक अ हॉल्ट, और पॉसिबिलिटी है दैट यहाँ से कंसोलिडेशन ट्रेंड में भी जा सकता है, और एल्स देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट फटाफट से ब्रेकआउट होके इट कैन क्रिएट न्यू ऑल टाइम हाई जोन एज वेल. सो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट एज ऑफ नाउ बेरिश सिग्नल्स बिल्कुल कुछ भी नहीं है. देन वी हैव बैंक निफ्टी, ऑल 3 time frames अबव 60. थर्सडे को एक इंडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुई आफ्टर विच इट गॉट अ बेरिश कंफर्मेशन. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से हमें हायर बॉटम देखने को मिल सकता है, और एल्स देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट जो पिछला वाला बॉटम था यहाँ पे आके सिमिलर बॉटम सिचुएशन भी बन सकती है, और एल्स इट कुड ऑल्सो टेक आरएसआई 60 का सपोर्ट, फॉर्म अ बुलिश कैंडल एंड देन यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग एंड बैंकिंग में भी PSU banks are outperforming as compared to private banks. So this is a great part. But again, थोड़ा सा retracement तो बनता रहता है. Like this is what the overall market cycle is all about. अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज से अप ट्रेंड. So again, the like all these 3 time frames keep revolving. एक के बाद दूसरा ट्रेंड आना ही है, whether it is on long term trend, medium term trend, or even on short term trend. So that's what we have to focus on. देन वी हैव प्राइवेट बैंक्स. अगेन यहाँ पे भी मंथली अबाउट 60, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एंड डेली इज नाउ अराउंड 60. द अनफॉर्चुनेट पार्ट हियर इज दैट यहाँ पे हायर टॉप नहीं बना है, ऑलमोस्ट सिमिलर टॉप बना है विथ आउटसाइड इनसाइड पैटर्न, प्लस यहाँ पे क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस भी है, बट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ बार्स बीइंग टू मच हायर, बिकॉज जो भी डाइवर्जेंस होता है स्पेसिफिकली जो बेसिक डाइवर्जेंस होता है उसमें नंबर ऑफ बार्स जितना कम हो उतना अच्छा होता है
and maximum number of bars is nothing but 15. तो most probably ये 15 से ज्यादा candles हैं, that's why this won't be counted as a divergence. But again, outside inside pattern है and double top pattern भी है with respect to price action, so there's a possibility that private banks में यहाँ से consolidation trend में भी जा सकता है for the time being. Then we have PSU banks. This is already performing at all-time high zone, but the sign of concern here is that पिछले 2 हफ्तों में like reversal candles form हुए हैं, प्लस यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को काफी ज्यादा बड़े बेरिश कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, बिकॉज ऑफ विच इट हैज ऑलरेडी swallowed like 3 to 4 days of bullish movement. And there's also a possibility that अगर 1-2 और बड़े bearish candles आ गए तो 3 से 4 हफ्तों की मूवमेंट वो खा जाएगा, एंड देन bears will take charge of this particular sector. और जो इतना आउट परफॉर्मिंग, इतना जोश से चल रहा था पीएसयू बैंक, सारे स्टॉक्स पीएसयू के जो अच्छे से चल रहे थे, that could potentially go into a consolidation trend for the time being as well. So we have to watch out for that. Then we have sector specific. Actually देखा जाए तो like more than half of the sectors were on the negative side and some of them were on the positive side. तो सबसे negative में down by 3.77, that was nothing but realty. And then we have metal down by 3.35 and so on. And best performing sector में we have IT up by 1.60 followed by auto 1.09 and so on. तो सेक्टर स्पेसिफिक के चार्ट देखें तो निफ्टी आईटी मंथली वीकली बिटवीन 40-60 डेली में ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे देखा जाए तो हायर टॉप हायर बॉटम बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं. सो अंटिल एंड अनलेस बुल्स आर नॉट टेकिंग स्ट्रॉन्ग चार्ज ऑफ दिस सेक्टर, तब तक हम लोग इसको अवॉइड करेंगे. देन वी हैव ऑटो ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60, एंड अगेन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था, आफ्टर दैट ब्रेकआउट जो हमें बुलिश साइड मूवमेंट देखने को मिली थी, अगेन इट हैज गॉन इनटू अ कंसोलिडेशन ट्रेंड. एंड जैसे मैंने निफ्टी 50 का भी बताया दैट ऑल टाइम हाई जोन पहुंचने के बाद लाइक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जोन के आसपास सेक्टर हो सकता है जो मेजर इंडाइसेस होते हैं वो कंसोलिडेशन ट्रेंड में जाए, सो दैट इट कैन टेक अ होल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बना के इट कैन गिव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड एज वेल. सो मोस्ट प्रोबेबली ऑटो इज ऑल्सो like auto is also one of the sectors which we can keep on our tracking list. Once it gives a strong move, तब हम auto stocks में भी trade कर सकते हैं on the longer side. Then we have metal. मंथली अबाउट 60, वीकली में ब्रेकडाउन कर चुका है, एंड डेली में तो लाइक इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर्मिंग लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज. अब आरएसआई 3940 के आसपास है. सो मोस्ट प्रोबेबली इफ इट ब्रेक्स डाउन ऑफ आरएसआई 40, तो मेटल सेक्टर कुड बी द सेक्टर व्हिच इज इन अ डाउन ट्रेंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड सो ऑन, बिकॉज लॉन्ग टर्म इज स्टिल बुलिश. मीडियम टर्म ट्रेंड कंसोलिडेशन में जा चुका है. सो ऑल 3 टाइम फ्रेम्स का जो ओवरऑल मोमेंटम वाइज एनालिसिस किया है हमने, like all 3 time frames are mismatching, so that's why this is not the outperforming sector, and I hope that the reasons are absolutely clear to you. Then we have FMCG, all 3 time frames between 40-60, we'll avoid this sector. Then we have energy, again इसमें भी तीनों टाइम फ्रेम्स between 40-60, अगेन बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है. एंड देन वी हैव फार्मा, अगेन यहाँ पे फार्मा में भी मंथली अबव 60 which means लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश, वीकली बिटवीन 40-60 एंड डेली भी 40-60 के बीच में, which means अगेन मीडियम टर्म ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड आर इन अ कंसोलिडेशन जोन. तो जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है, फार्मा इज ऑल्सो one of the sector which we can keep on our tracking list. Then we have infra, monthly above 60, weekly above 60, daily also above 60. All 3 time frames bullish way में है and all time high zone के आसपास है. So there's a possibility that यहाँ पे भी halt ले सकता है, or else it can straightforward give a strong move on the upper side, and then infra stocks में भी अच्छे से one sided rally हमें देखने को मिल सकती है. Then we have realty, all 3 time frames, not actually all 3 but monthly and weekly consolidation में है. Daily is in a bearish trend, so forming like lower top lower bottom series on this chart as well, right? So again we have to avoid this sector. Then we have media, all 3 time frames below 40. This is one of the bearish, like one of the most bearish sectors so far, right? So I hope that you're absolutely clear with this, and I also hope that आपको अच्छे से समझ में आया होगा that on what basis we are analyzing and on what basis we are filtering out कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, लाइक एट द वर्ज ऑफ आउट परफॉर्मेंस है, एंड सो ऑन. एंड इन द वे आई हैव डन द एनालिसिस, आपको उसी तरीके से जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक स्पेसिफिक में जाके खुद से एनालिसिस करना है, so that you can create your own buying list, and whenever it gives confirmation you can start trading in those stocks from Monday, Tuesday, जब भी उसमें confirmation आता है, based on whatever the system or strategy you might have learned.
And I hope that you have got enough value from this epic episode as well. And please do make sure that जो भी आपके takeaways हो, do share below in the comment section. And if possible, you can share this episode with at least one friend or family members of yours who is looking forward to be a swing trader, and he or she might be struggling, but from this series they can actually learn about it. And specifically from basics of technical analysis series, जो 17-part video series है, you can share that series with them as well. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.